डिलीट। Yes, 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 delete. Question number 65. Evora Limited. Acha. You should assume that today's date is 1st of June 2025. Evora and Sahil Limited. Evora owns 100% shares in Sahil Limited. Evora and Sahil are both UK resident trading companies. Both companies prepare accounts to 31st of March each year. Explain the corporation tax treatment for Sahil in the year ending 31st of March 25 in relation to the acquisition of each of the two assets. Sahil Limited acquisition of assets from an unincorporated business. On 1st of April 24, Sahil Limited acquired the following assets from an unincorporated business. Healthy brand 50,000 and specialist machine 30,000. Sahil Limited is using both of these assets for the purpose of its trade. Okay, Healthy brand will be amortized on a straight line basis over an 8-year period. Okay. Specialist machine was previously used by the unincorporated business in its trade. Sales Limited will adopt the most tax efficient treatment which is available for these assets. Amy, would you like to say something? चला ही गया भाई हाँ कुछ एसेट्स के लिए कुछ बता सकता है तू मुझे 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 पता है इसलिए ये पता है। मैंने Okay. एक्चुअली इस सम का वीडियो बनाया हुआ है इसलिए मेरे को पता है हाँ हाँ। हम्म फिर कोई ना तू कर एक्विजिशन के लिए अभी क्या आपने को बताना क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसे कैसे तू बोल सकता है भाई समझ कॉर्पोरेशन नहीं आ टैक्स रहा है ट्रीटमेंट बताना है। कॉर्पोरेशन हाँ टैक्स ट्रीटमेंट बताना है तो ये एक एक जो एसेट है ये तो इंटेंजिबल एसेट है, फिर दूसरा अपन ने मशीन लिया है। ये मशीन को तो अपन पूरा का पूरा ले सकते हैं ना एज एक्सपेंस। परफेक्ट लेकिन एज एक्सपेंस या क्या मतलब वो तो बता एज एक्सपेंस या क्या मतलब? कैपिटल एआई ये की बोल तरह रहे तो लेगा ना कैपिटल अलाउंस का। हाँ कैपिटल अलाउंस की तरह लेगा ना हाँ इस पूरे हाँ हाँ मशीन को वो हो गया फिर अभी हाँ हाँ एल्टे हाँ। ब्रांड के साथ क्या होगा तो वो क्या करेगा एल्टे ब्रांड के साथ वो नहीं क्या करते याद अपन आ रहा है। इंट हाँ तो मैं तो बता देता हूँ जो चीज अपन टैंजिबल एसेट्स के साथ करते हैं ना वो अपन सेम इसके साथ नहीं कर सकते इंटेंजिबल के साथ इंटेंजिबल को तेरे को हाँ। हर साल एमोर्टाइजेशन ही मारना है ओवर द स्ट्रेट लाइन बेसिस तो ये लोग का 8 साल का पीरियड है ओके। तो 50,000 आठ डिवाइड साल बाई का तो 8 डिवाइड बाय करेगा 8। तू परफेक्ट परफेक्ट ठीक है। ओह नाइस एवोरा लिमिटेड ये रहा amortization will be charged साहिल on a का। straight line basis an alternative treatment हाँ an alternative treatment is also there basically जहाँ पे तू इस चीज को 4% पे मारता है and then you take हाँ the हाँ हाँ best हाँ method हाँ। that you get basically ऐसा रहता है यस 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 intangible यस यस। assets में ठीक है ना ये तू लाइन में तू हमेशा उसकी भूल जाता कॉस्ट हूँ पे, उसके कॉस्ट पे 4% मारता है ना हाँ उसके एवरी ईयर। कॉस्ट पे तू 4% मारता है फिर तू देख रहा है कि तेरे को ज्यादा amortization कहाँ पे मिल रहा है फिर तू वो वाला चीज सिलेक्ट करता है ये चीज मैं हमेशा भूल जाता हूँ भाई इंटेंजिबल एसेट को लेके स्पेशलिस्ट मशीन एआईए 12 मंथ अकाउंटिंग पीरियड वो तो पूरा का पूरा मिलेगा डन यस यस। ठीक है तो अभी अगर तू देखेगा तो तेरे को डिवाइड बाई 8 करके ज्यादा वैल्यू मिल रहा होगा तो वी आर जस्ट सेव्ड हम्म बट अगर 4% से ज्यादा मिलता तो फिर हम उसको सिलेक्ट करते तो वो लाइन डालना इंपॉर्टेंट है दो वी हैव गॉट द आंसर राइट B का first one. हम्म। Explain by reference to the reliefs available for the forecast trading loss why it will be advantageous for Evora Limited to commence trading in Salema through a permanent establishment rather than an overseas subsidiary company. You should assume for this part that Evora Limited does not make an election to exempt the profits of its overseas PEs from the UK corporation tax. ओके। overseas subsidiary ठीक है तो ये रहा
On 1st of July 25, Evora will start trading in the country of Salema. Evora Limited has been advised that it will be advantageous for tax purposes to operate through a permanent establishment rather than a subsidiary company incorporated in the tax and a tax resident in Salema. Overseas operations will be loss making for the first 9 months of the trading, after which it is expected to be profitable. Evora will take relief for the loss incurred by its operations in Salema as early as possible. Evora Limited currently has no other overseas operations but plans to open additional permanent establishment overseas within the next few years. तो अब बताना है कि क्यों बेटर है. टैक्स सिस्टम भी दिया है अपने को सलेमा का. द हम्म. रेट ऑफ टैक्स ऑन द प्रॉफिट्स ऑन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज सलेमा इन सलेमा इज 28%. डीटीआर भी अवेलेबल है तो लवली. एवरा लिमिटेड यूके ऑपरेशन. ठीक है, एवरा लिमिटेड को भी लॉसेस है क्या? नहीं, एवरा लिमिटेड को प्रॉफिट्स है, नहीं नहीं, इसको लॉसेस है. प्रॉफिट्स है. तो बता अभी कैसे करेंगे और क्यों इम्पोर्टेंट है पी की तरह ओपन तो करना. परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अपने को ओपन करना एज ए सब्सिडरी से बेटर है, बिकॉज एज ए सब्सिडरी तो ओपन किया तो वो तेरी ओवरसीज सब्सिडरी हो जाती है, तो यू कैन नॉट क्लेम एनी लॉसेस और एनीथिंग. इट विल बी इन द ग्रुप, ऑल्दो इट हम्म. कैन नॉट क्लेम एनी लॉसेस, और कुछ भी लॉस रिलीफ बेसिकली नहीं मिलेगा उसको. rather देन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ यूके कंपनी का ब्रांच, तो इट कैन क्लेम ऑल द लॉसेस. एंड एंड इट इज नॉट अ सेपरेट और क्या लीगल क्या एंटिटी एडवांटेज? बेसिकली. हाँ, इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. 3 ही मार्क्स का है वैसे तो ये क्वेश्चन. और सेकंड अच्छा, वाला, 3 ही मार्क्स है सेकंड क्या? क्या पूछा था? और हाँ, यू शुड अज्यूम दैट फॉर दिस पर्पस एवर. हाँ, तो ये जो इलेक्शन बनाया है, दिस इज इररिवोकेबल एंड make an election to exempt profits of its overseas PE. अच्छा. बेसिकली तो इफ इट now मेक्स एन इलेक्शन तो फिर वो, हाँ, हाँ क्या होगा बता. तो ये लोग ने बोला कि does not make an election. हम्म. So now if it is a if it is an overseas PE, so the profits cannot be remitted. The profits cannot be remitted नहीं बोल सकते ना? बेसिकली अभी यहाँ पे अच्छी बात है कि दे हैव नॉट मेड एन इलेक्शन, बिकॉज इफ दे वुड हैव मेड एन इलेक्शन टू एग्जेम्प्ट द प्रॉफिट्स, देन देन लॉसेस वुड आल्सो नॉट Then बी losses would अलाउेबल. also be. हाँ हाँ. हाँ. कैपिटल अलाउंसेस वुड नॉट बी अलाउेबल. देन Yes. और क्या था, द इलेक्शन वुड बी इररिवोकेबल, ब्ला ब्ला ब्ला. अभी स्टेट द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एवोरा ऑफ मेकिंग. अच्छा नहीं, ये देख वो सब चीजें हमें यहाँ पे नीचे बोलनी है तो कुछ नहीं, नीचे कंट्रोल बोलनी है. एक्स करके नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे. स्टेट द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एवोरा लिमिटेड ऑफ मेकिंग इलेक्शन टू exempt the profits of the overseas PEs from UK corporation tax and advise company whether or not it will be beneficial to make an election on the basis of the company's current forecast results and future plans. तो ये देख, तो अभी के टाइम पे तो हम्म. ये लोग लॉस मेकिंग कर रहे हैं पहले 9 मंथ्स के, तो पहले 9 मंथ्स के तो इन लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है. चुपचाप पीई की तरह ट्रेड करो. अगर उसके बाद इलेक्शन करके सब्सिडी बनाना है तो वो बना सकते हो, लेकिन उससे क्या क्या होगा फिर वो अपन बता देंगे. नहीं, एक्चुअली इलेक्शन इलेक्शन पहले ही बनाना पड़ता है, फर्स्ट ईयर में ही बनाना पड़ता है, बिफोर यू अच्छा ऐसा रेमिट रहता है. एनीथिंग. और व्हेन यू, हाँ, कुछ भी तू रेमिट, जिस साल तू फर्स्ट टाइम रेमिट करना है तेरे को उसी साल में तेरे को इलेक्शन भी बनाना है नहीं कि नहीं, तेरे को ऐसा इसको नहीं है एमी. प्रॉफिट्स. ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे याद है अब्दुल और सर ने ये पॉइंट बोला था कि बेसिकली अगर तेरे को पता है कि तू अगले कुछ सालों में लॉस करने वाला है तो फिर तू उतने टाइम तक उसको पी रख, एंड देन जब वो बाद में स्विच करे तो तू बाद में उसको सब्सिडी की तरह स्विच कर दे जब वो मतलब प्रॉफिट बनना स्टार्ट करेगी तब. श्योर. ऐसा. हाँ हाँ, श्योर श्योर. कि कल अपन पढ़ रहे थे तभी तभी था वो. चेक करते हैं, चल बाद में पीछे चेक करते हैं. यस यस. तो ये अपने को सेट ऑफ करने को मिलेगा, अच्छा खासा अपने को अमाउंट सेट ऑफ करने को मिलेगा. अपने को प्रॉफिट्स एट व्हाट रेट सेव होंगे वो अपन बता देंगे, सॉरी मतलब वो टैक्सेस एट व्हाट रेट सेव होंगे. तो 2,40,000 इंटू 25% पे अपने को इंटू सारे प्रॉफिट ट्वेंटी सेव होंगे. फाइव तो ये देख, पढ़. भी अवेलेबल होगा. A PE does not constitute a separate legal entity, unlike a subsidiary company. Therefore, as the PE will incur trading loss in the first 9 months of trading, this can be offset against Evera's Limited's
offset against Evora Limited's UK trading profit for the year ending 31st March 2026, thereby obtaining immediate tax relief for the losses. However, trading losses incurred by a non-UK tax resident subsidiary company would not be available for relief in the UK, so loss relief would be delayed. परफेक्ट. अभी ये. Election to exempt the profits, tax consequences. Trading profits generated in overseas PEs will not be liable to UK corporation tax. No reliefs will be available in the UK in respect of trading losses incurred in overseas PE. No capital allowance can be claimed in the UK in respect of assets acquired for use in the overseas PE. The election is irrevocable. The election will apply to all future overseas हाँ. PEs established by Evora. यस. परफेक्ट. अभी ये. So advice to Evora, this is clearly no advantage in Evora Limited making this election at this point as the PE in Salima will generate losses in the first 9 months of trading which without making without making the election can be relieved in the UK. When the PE in Salima subsequently becomes profitable, oh, तो वैसा कर सकते हैं. After the 9 month period, there will be no UK corporation tax liability in respect of these profits due to availability of DTR. Oh, this is because the rate of tax charged on the profits in Salima is higher than the rate charged in the UK. हाँ, तो So there बेसिकली is still no वहां पे रेट. advantage in हम्म. making the election बेसिकली ये at this अलाउड point. है, लेकिन हाँ, वहां पे रेट फिर भी हायर रहेगा, तो इट इज मच बेटर कि हम अब हमारे कंट्री में उसको पीई की तरह रखें. इन एडिशन द yes, इलेक्शन वुड yes. प्रिवेंट यूके कैपिटल अलाउंसेस बीइंग अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट्स यूज्ड इन any overseas fees, and no loss relief would be available in respect of any future trading losses incurred by any overseas fees, including those which are yet to be set up. Therefore, making this election would not appear to be beneficial for Evora Limited. ठीक है. Got it. इन्होंने मल्टीप्लाई वगैरह कुछ किया ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही थियरी बताया. ठीक है. Hmm. फिर ये explain how the following items will be reported on Evora Limited's value added tax return for the quarter ended 30th of June 2025. The service purchased from the overseas legal firm and the goods acquired from overseas supplier. Okay. सेम ही है आंसर, बट ये पढ़ ले. Evora Limited registered for the purpose of VAT in the UK and makes wholly taxable supplies. In April 2025, Evora Limited engaged the services of legal firm in Salema, to which it paid a fee of 3,500 in the month of, in that same month. In May 2025, Evora Limited purchased goods from a supplier in Salema costing 2,100 for sale in its UK operation. परफेक्ट. दोनों के लिए वैसे ही होगा ना. वही. दोनों के लिए वैसे होगा, लेकिन मैंने तो दोनों सालेमा साइड खोली से कब है. इंपोर्ट. ये देख, वो 1 जुलाई 25 को स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उसने 1 अप्रैल 25 को अपनी वो अप्रैल लीगल सर्विसेज ली है. तो अपने को प्री अप्रैल मई रजिस्ट्रेशन जून जुलाई एक्सपेंसेस को प्री भी रजिस्ट्रेशन. बोलना हाँ, पड़ेगा. तो वो 6 महीने के, छह तो महीने के. खाली वो एक लाइन है, वरना टैक्स ट्रीटमेंट तो अपने को हाँ, पता ही है कि ओवरसीज से तो कुछ भी लेगा फिर भी 20% के रेट पे ही है वैट वो सब. हाँ. गुड्स के लिए भी 4 साल का बोल देंगे, खत्म बात है फिर तो. 6 महीने का सर्विस के लिए है ना. और हाँ. गुड्स के लिए प्रीवियस 4 years का अपन ले सकते हैं. हाँ, बराबर है, फिर वो टैक्स न्यूट्रल हाँ. इफेक्ट जाएगा. Overseas legal fees, यस. the legal services provided by to Evora Limited will be regarded as being supplied in the UK, as this is Evora Limited's place of business. Accordingly, Evora will be required to account for output tax in its VAT return for the quarter ending 30th of June 25. It can then recover this amount as input VAT on the same VAT return. Therefore, this expense will not impact on the amount of VAT payable by Evora Limited for this quarter. एक मिनट. It paid a fee of. हाँ, बराबर है भाई ये. तो फिर अभी आगे import of goods on the assumption that Evora Limited uses postponed accounting. पोस्ट पेड पढ़ा भाई मैंने उसको. postponed accounting in respect of the import of the goods from overseas suppliers. These goods will be reported on Evora Limited's VAT return for the quarter ending 30th of June 2025 in the same way as the legal fees or legal services supplied above. Therefore, expense will also not impact the amount of VAT payable by Evora Limited for the VAT quarter. ठीक है ना.
सेम है, लिटरल सेम करना है। ये ट्रैक्स न्यूट्रल इफेक्ट देना है, जो इनपुट वैट है वही आउटपुट वैट की तरह शो कर।